friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita, your English teacher from ICT virtual class. Today we are going to discuss the question answer from the chapter, the last lesson from the book Flamingo, written by बच्चों, as you know, we have already completed this chapter. आज हम हैं today we are going to discuss the question answers of this chapter. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? This chapter, the last lesson that on the days of Franco-Persian War. ये क्या हुआ था? In which France was defeated by Persian. तो जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं? जर्मनी के नाम से जानते हैं. इस तरह से उसको डिफीट कर दिया था और उसके दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के. कौन कौन से थे? लॉरेन एंड अल्सेस के पास चले गए थे. हैव पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ जर्मनी. और इस तरह से वहां पे बर्लिन क्या कैपिटल है जर्मन की और वहां जर्मनी की, और वहां से ऑर्डर आए थे जो एल्सेस और लॉरेन है वहां पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इंस्टेड ऑफ दैट जर्मनी पढ़ाई जाएगी. दैट इज व्हाई द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. तो इसको हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था बच्चों, और अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. अल्फोंस डॉटेड 1897 इनकी लाइफ जर्नी रही है. और जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे फ्रैंको पर्शियन वॉर की बात करी गई है 1870-1871. जिसने इनके दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक कौन था? एल्सेस और एक था लॉरेन. यहाँ पे आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो डिस्ट्रिक्ट इसके थे, ये फ्रांस के. फ्रांस, टू डिस्ट्रिक्ट्स, वन इज योर एल्सेस और सेकंड इज योर लॉरेन. बाद में ये किसके पास चले गए थे? जर्मनी के. passed into the hand of Germany. कब गए थे? वॉर के टाइम व्हेन फ्रांस वाज डिफीटेड. राइट. तो ये पहले किसके पार्ट थे? फ्रांस के पार्ट थे. और आफ्टर वॉर 1870 की बात है, 1871 व्हेन फ्रांस वाज डिफीटेड, passed into the hand of Germany. तो ये बच्चों हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, वर्ड मीनिंग पढ़ी थी. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. समरी क्या है बच्चों? द स्टोरी इज नरेटेड बाय ए फ्रेंच बॉय. नरेट करी है फ्रेंच बॉय ने करी है, जिसका फ्रेंच एक स्कूल बॉय है. द होल चैप्टर वाज नरेटेड बाय फ्रेंच. ही इज लेडी. कैसा था वो? लेडी था, sensitive, likes to play. He dislikes studying French and hates his teacher and Hamel. तो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था लास्ट में, कैसे वो रियलाइजेशन होता है, उसको रियलाइज करता है that he has wasted this time. After overpowering their districts of Alsace and Lorraine. तो मेन क्या है बच्चों? ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, Alsace and Lorraine. France, Berlin has ordered कहाँ से आए थे? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है. बर्लिन से ऑर्डर आए थे, और बर्लिन क्या कैपिटल ऑफ जर्मन. Ordered that German language instead of French be taught in the schools. तो it means क्या था बच्चों? वो दिन जो था, that day was the last day जब वहां पे फ्रेंच पढ़ाई जा रही है. It is the last day of their French. M. Hamel, who has been for 40 years. अब हैमल ने कितनी सर्विस दी थी अपने स्कूल को? 40 years की. तो 40 years बहुत जो है बच्चों की तरह से उसके अंदर जो है देशभक्ति दिख रही थी. और he is full of grief, nostalgia and patriotism. देशभक्ति. As a mark of respect to his hard work, जितने भी विलेज के लोग थे वो कहाँ आए हुए थे? उनकी स्कूल में. और लास्ट में भी डिसाइड. French is shocked to know. और फ्रेंच को क्यों शॉक हुआ था? To know that it's his last lesson. He does not know French. तो उसे फ्रेंच नहीं आती थी. क्यों नहीं आती थी बच्चों? तो उसने सारा टाइम अपना वेस्ट किया था. क्या हंटिंग करता था? हंटिंग द फर्स्ट एक्ट. Suddenly he gets interested in, और suddenly जब उसको पता चला कि it's the last lesson of French, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, interested in learning it and understands everything taught on that thing. He develops an instant liking for the teacher. अब जो टीचर उसको जो थोड़े से लग रहे थे, अब थोड़ा सा वो क्या हो गया उनकी तरफ
अंडरस्टैंड, अपने टीचर को समझने की कोशिश करें. इंस्टेड लाइकिंग फॉर द टीचर एम हैमल एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क. ही फील्स सैड एट डिपार्टिंग फ्रॉम हिम. उनके जाने का उसे दुख था एंड इज अशेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिसाइट. और जैसे ही आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक दिया था टीचर ने, हैमल ने, पार्टिसिपल्स का. तो वो जब उसका टर्न आया तो क्या हुआ था बच्चों, he is not being able to recite the lesson of participles. Mr. Hamel tells them that they are all at fault. अब उन्होंने ये नहीं कहा कि fault है, बच्चे का fault है. उन्होंने क्या बोला बच्चों, was his parents fault, उसके पेरेंट्स का fault है. और दूसरा ब्लेम उन्होंने अपने ऊपर लिया कि कई बारी जो क्या करते थे वो, being eager enough to learn, putting it off द नेक्स्ट डे. और उन्होंने ये भी बोला कि कई बार हम कोई आपको कोई काम देते हैं लर्न करने के लिए, होमवर्क देते हैं, तो आप कहते हैं नो नो आई डू इट, आई विल डू इट टुमारो, कल पे डाल देते हैं, फिर कल पे. तो इससे क्या होता है, बहुत लेट हो जाता है. तो उन्होंने कहा कि दे आर एट फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ईगर इनफ टू लर्न, पुटिंग ऑफ टू द नेक्स्ट डे. ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली. और दो जो है रीजन, जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू, एक उन्होंने दिया कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, और दूसरा हम कल पे डालते रहते हैं कि वी विल डू इट टुमारो. तो इससे जो है काम लेट हो जाता है. और जैसे अभी जो है फ्रेंच के साथ बात, दूसरा ब्लेम उसने अपने ऊपर डाला कि नॉट टीचिंग देम सिंसियरली. दिस patriotism is reflected in his the French language as being the most beautiful and most logical language in the world. He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. अगर किसी का जो है आप किसी अंडर में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर इससे आपको बचना है तो यू हैव टू गार्ड योर लैंग्वेज. It helped them in getting free from the Germans. He realized the importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by the Germans because of their illiteracy. उन्होंने ये बताया कि आज हमारी दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एल्सिस हैं और लॉरेन है, क्यों जर्मनी के पास चले गए, कि हमारी इलिटरेसी. उन्हें अपनी जो है लैंग्वेज को अगर हम प्रिटेंड करते हैं, जैसे अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था कि हम प्रिटेंड करते हैं कि क्या है, फ्रेंच मैन है, बट अगर हमें कोई बोले कि फ्रेंच में बोलने के लिए बोले या लिखने के लिए बोले, वी आर अनएबल टू राइट एंड फ्रेंच. क्लियर. तो उन्होंने यहाँ बताया कि आज जो हमारी हार हुई है, डिफीट हुए हैं, और उसका रीजन क्या है, इलिटरेसी. French feels that it is not possible to take away one's language from a person, as it is natural to teach being, may it be the coup, the peasant, or French to the Frenchman. उन्होंने कहा ये जो है नेचुरली आते हैं, फ्रेंच की है ये फील ओपिनियन था that it is not possible to take away one's language, but जैसे यहाँ पे coup अगर पीजेंट्स कर रहे थे तो मे बी वो उसे लग रहा था कि ये किस में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज में. तो फ्रेंच टू द फ्रेंच. तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. थीम क्या था, द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स कनेक्शन. कि अगर हमें लैंग्वेज आती है तो हम अपने देश के किसी जो है सिटीजन से यू कैन इजीली टॉक. The protagonist of the narrative is a little kid, French, whose teacher, M. Hamel, is compelled to flee his native town in Francois Alsace region because German settlers are annexing it and making German its official language. Now the mother tongue, French, will not longer be taught in the schools of French districts. तो ये आपको याद रखना है कि कौन से दो डिस्ट्रिक्ट से लॉरेन एंड एल्सेस जो किसके पास चले गए थे आफ्टर डिफीटिंग बाय जर्मनी से. Even though it is obvious that his students won't be able to speak, और उन्होंने बाद में ये भी रियलाइज करा कि उनके जो हैं स्टूडेंट्स या जो फ्रेंच मैन हैं वो क्या कर सकते हैं, they won't be able to speak French in the future. The narrator's French teacher, Monsieur Hamel, हमने यहाँ पे पढ़ा है एम हैमल, तो पूरा नाम क्या है उनका, Monsieur Hamel.
is determined to give them one more lesson in the language. The teacher emphasizes that language is an integral element of one's identity and culture, and that its separation constitutes an act of oppression as done by the enemy country. अगर कोई हमें जो है ऑप्रेस करता है तो दोनों जो है उसमें शिकार होते हैं, राइट, बाय द, अगर हमें अपनी लैंग्वेज आती है तो कोई भी हमें हमारे ऊपर जो है ओवर पार नहीं कर सकता. The French villagers realized that they have been overpowered by the enemy soldiers because they did not value their country and their mother tongue. हम जहाँ पे रहते हैं अगर हमें वहाँ की मातृभाषा नहीं आती है और हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे अपने कंट्री की, तो कोई भी जो है वो जो है कह सकते हैं ना कि जैसे आप लोग हैं, अगर आपका कोई एनिमी है और आप देखता है कि इस से ये वर्क नहीं कर रहा है या एनिमी है, तो वहीं पे वो अटैक करता है. तो सेम जो है हमारे वीक पॉइंट्स जो है एनिमी या अदर कंट्रीज जो है वो नोटिस करती हैं, और उसी तरह से जब उन्हें पता चला जर्मनी को कि जो फ्रेंच के लोग हैं जो वहाँ के सिटीजन हैं, दे वोंट बी एबल टू राइट फ्रेंच, तो उन्होंने उनके ऊपर अटैक करा और यही उन्होंने करा डिफीटेड बाय जर्मनी. तो डिफीट हुए, दैट्स द रीजन उन्होंने कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं करी एंड देयर मदर टंग. नाउ कम टू द क्वेश्चन. तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा है, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. तो क्वेश्चन इज योर, notice the underlying words in these sentences and take the option that best explain their meaning. Okay? What is a thunderclap? These words were to me. अब thunderclap means जब क्या थे thunderclap words बच्चों? क्या हेमल को लगे थे जब उन्हें पता चला था कि it was the last French lesson. उन्हें पता चला कि आज जो है उनका या उनके टीचर का क्या है, लास्ट डे है. तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, startling and unexpected. उन्हें नहीं बिलीव था कि it was his last lesson. So this is the answer. 4 options आपको choose करना. Many people are enslaved as long as they hold fast to their language. It is as if they have the key to their prison. इसका मतलब क्या है कि when people are enslaved, तो यहाँ पे क्या मीनिंग था उनका, राइटर का, नरेटर का, are attached to their mother tongue. You should know about your language. कहीं पे भी रहते हैं, कोई भी आपकी country है, तो you should respect your country and mother tongue. Don't go so fast. ने बोला था ये बच्चों, ब्लैक स्मिथ ने बोला था वॉचर ने, you will get to your school in plenty of time. You will get to your school. क्यों बोला था? तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत जल्दी है, early enough. Very late is wrong, too early, early enough. Never saw him look so tall. एक यहाँ पे phrase था, never saw him look so tall. It means him very confident. Short answer type question say, what do you think? Little French afraid of being scolded. अब क्यों से डर लग रहा था? आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे 30-40 वर्ड्स के. तो French was afraid of being scolded that day, especially because M. Hammer, the teacher, had said that he would question them on participle. किस पे क्वेश्चन पूछना था बच्चों? Participles में. French frankly admits that he was totally ignorant क्योंकि उसे आता था बच्चों. He didn't know a single word. I didn't know the first word about them. Secondly, he had started or already was late on that morning. It was all much more tempting, attractive. Then the rule for participles. क्या चीजें उनको जो है tempted कर रही थी, attract कर रही थी फ्रेंड को while when he was going to school. तो क्या कर रही थी बच्चों? एक तो जो weather था, it was pleasant. बहुत ज्यादा जो है warm था, जैसे वहां पे ठंड होती, but on that day उस दिन क्या था? It was warm and bright. Birds क्या कर रही थी? Birds were at the edge of woods. The Persian soldiers क्या कर रही थी? They were drilling in the open field at the back of sawmill. He could gladly spend life out of doors. However, he had the strength. But
ने जो चीजें उनको अटेम्प्टेड करी थी, अट्रैक्ट करी थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, एंड ही हैड टू स्टैंड टू रेजिस्ट, अपोज करके द टेम्पटेशन, फाइनली ही हरीड अप टू स्कूल, और वो स्कूल के लिए चले गए. व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, स्टेज फ्रेंड्स. अब यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड में बहुत ज्यादा क्या था, क्राउड था, बट ही डिडंट स्टॉप. क्यों नहीं रुका वो? क्योंकि उसको स्कूल के लिए देर हो रही थी. अब उसके माइंड में चल रहा था व्हाट मैटर नाउ, कि उस बुलेटिन बोर्ड से क्या हो रहा था बच्चों, जितने 2 साल से, लास्ट 2 इयर्स बैड न्यूज थी रिगार्डिंग वॉर, सारी कहां से आ रही थी, बुलेटिन बोर्ड से, राइट? So there was a bulletin board near the town hall. When Frank passed by it, he noticed a crowd there. He didn't stop to look at it. He wondered that what could be the matter then. For the last 2 years, they had received all the battle. तो जो आपको चैप्टर आता है, राइट, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, और उसके बाद जो है बच्चे बहुत इजी होता है, अगर चैप्टर आपको पता है, यू नो द चैप्टर, so it is easy for you to write the answer. Clear? The lost battle, conscription, and the orders of the commanding officer. कोई भी न्यूज होती है regarding war, वो कहाँ से आती है? Bulletin board से. Next क्या है बच्चों? Who was watching? Watching कौन था बच्चों? Practice with. जैसे अभी मैंने बताया था आपको. What did he ask? French and why? How did French react? अब इसको आपको ब्रेक करके लर्न करना है. First है who was watcher. Watcher कौन है? Practice with. Second part क्या है बच्चों? What did he ask? He was, अब क्या कर रहा था वो? He was reading the latest bulletin. बुलेटिन बोर्ड के आगे खड़ा था और रीड कर रहा था कि आज कौन सी न्यूज़ थी. He asked friends not to go so fast to his school. He added that the little boy would get to his school in plenty of time. बहुत जो है टाइम वेस्ट करना, बहुत ज्यादा टाइम है. Watcher had read the latest bulletin about teaching of German. Third part क्या है? How did French react? French thought that, और फ्रेंच ने क्या रिएक्ट करा जब उन्होंने उसको रोका कि भाई तुम्हारे पास जो है क्या है, ब्रांच ऑफ टाइम है, टू गो टू स्कूल. क्या रिएक्शन था उसका? फ्रेंच थॉट कि वो ही क्या कर रहा था, मे बी मेकिंग फन, राइट? So Frank thought that the blacksmith was making a fun of him, so he ran to the school and reached there, breathlessly panting. What was the usual scene when Frank's school began in the morning? कैसा सीन था जो अभी आपको लर्न होगा? क्वाइट था, जैसे और दिन कैसा रहता था, बहुत ज्यादा नॉइज रहता था, बजल रहता था. ओपनिंग नॉइज ऑफ किस आवाज आती थी? ओपनिंग एंड क्लोज, the closing of their desks. Usually, when the school began, there was a great buzzer. The noise could be heard out in the school. बाहर से आवाज आती थी. Students opened, closed their desks. They repeated the lessons together very loudly. They kept their hands over their ears. Understand better. जैसे हमने पढ़ा था कि क्या करते थे बच्चे, कान में उंगली रख के और खूब जो लेसन पढ़ाते थे उसको रिसाइट करते थे, जोर जोर से बोलते थे. The teacher would go on rapping the table with his great iron ruler. Right? यहाँ पे क्या लिखा है कि what was the usual scene? कैसा होता था? तो वही हमने यहाँ पे मेंशन करा है कि बहुत नॉइज होती थी, आवाज होती थी, बच्चे कैसे जो है अपने चैप्टर को रिपीट करते थे, और जो टीचर थे वो कैसे रैपिंग करते थे अपने आयरन रूलर ऑन द डेस्क. How did Frank hope get to his desk? What had he and why? French had hoped to get his desk unseen. ये रोज कैसे जाते थे वो, क्योंकि हल्ला होता था तो चुपके से अपनी सीट चले जाते थे, unseen during the motion. Confusion रहता था. But that day it was very quiet. So French had to open the door and go in before everybody. He blushed as he was late. He was frightened that the teacher might rebuke him, but Hamel spoke kindly to him that day. परंतु उस दिन जो है उसको डर लग रहा था, ब्लश हो गया था. ऑब्वियसली आप लेट आ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप एंटर करेंगे क्लास में, तो आप क्या करोगे? फ्राइटेंड होगे. तो सेम जो है फ्रेंच के साथ हुआ. बट ऑन दैट डे एम हैमल स्पोक kindly. What three things in school surprise French most अच्छे? अब कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो उनको सरप्राइज करी? एक तो जो टीचर थे वो कैसी ड्रेस में थी, जो पहनते थे वो, कोई एनुअल फंक्शन होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या इंस्पेक्शन होता था,
So first, Mr. Hammer, the teacher had put on his fine Sunday clothes, his beautiful green coat, frilled shirt, थी, embroidered थी, the little black silk cap थी, all embroidered. Second point क्या है बच्चों? The whole school seemed quiet and strange. सारी चीजें, everything was quiet and still. Thirdly, the village people, और तीसरी चीज उसको अमेजिंग क्या लगी थी, a surprise. The village people were sitting quietly like school children on the back benches that usually remain empty. तो यूजुअली कैसे रहते थे, खाली रहते. तो तीन कौन कौन से? फर्स्ट, आम हेमल का ड्रेसअप. सेकंड क्या था बच्चों? कैसा एनवायरमेंट था, क्वाइट था, स्टिल था. थर्ड पॉइंट इज जितने विलेज पीपल थे दे वर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्कूल चिल्ड्रन. Why had the villagers come to school? क्यों आए थे उस दिन? 40 साल की जो है उनकी सर्विस, और किस तरह से एक अटैचमेंट हो जाता है. तो विलेज के लोग जो है उन्हें ऑनर देने के लिए दैट villagers had come there to thank Mr. Hamel for his 40 years faithful service. They also wanted to show their respect to the country that was theirs no more. They were sorry that they had not full moon. They were sitting quietly and looked sad. What is thunderclap? These words, तो ये छोटे छोटे phrases हैं जो important है. Mr. Amhammer, the teacher, told the children in a solemn and gentle tone that it was their last French lesson. Henceforth, only German would be taught in the school of Alsace Lorraine. Alsace और लॉरेंट क्या है? अब सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्या है ये? 2 districts of France. या आप कह सकते हैं French districts, Alsace and Lorraine. The new master would come the next day as that was their last French lesson. Next question क्या है बच्चों? How did French react to the declaration? This is your last French lesson. The words appeared startling and unexpected. तो ये अभी हमने पढ़ा भी था. Like a thunderclap, he now understood why there was a crowd at the bulletin. तो अभी भी पता नहीं चल रहा था कि क्या रीजन था, कितने लोग जो है कंफ्यूज था. बट नाउ ही अंडरस्टूड, उसे पता चल गया था कि वहां पे क्या है. व्हाई देयर वाज अ क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड, व्हाई द विलेज पीपल हैड कम टू स्कूल, व्हाई द टीचर वाज ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट, and why there was sadness and silence in the school. What tempted friends to stay away from the school? तो ये अभी हमने से पहले भी कहा था कि फ्रेंच वाज नॉट प्रिपेयर्ड. एक तो प्रिपेयर्ड नहीं था, दूसरा वो लेट हो गया था फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल. द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉमिल. बर्ड्स की जो चर्पिंग थी वो उसे टैम्प्ट कर रही थी. और वेदर कैसा था बच्चों? और जो कैसा था? वार्म एंड ब्राइट. Who did M. Hamel blame for neglect of learning? को ब्लेम कर रहा था, तो कई बार मैंने इसको रिपीट किया है. पीपल ऑफ एल्सेस दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. तो बच्चों आज से जो है इस लेसन से आपको एक मैसेज मिल रहा है. कोई भी काम करना है आपको तुरंत करना है, और उसको जो है टालना नहीं है कि भाई आई विल डू इट टुमारो. कल पे नहीं छोड़ना है, जो भी काम मिल रहा है तुरंत करना है. अदरवाइज आपने देखा कि किस से जर्मन ने उनको ओवर पार्ट करा था डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंट. पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बताया था उन्होंने, राइट, कि वो बच्चों को earn money for their survival. They put them to work on a farm or at the mills in order to have a little more money. The teacher got his flowers watered. और थर्ड जो है उन्होंने अपने आप को ब्लेम दिया था, मैं कभी कभी बच्चों को भेजता था to water the plants. What did M. Hamel tell them about French language? के लिए क्या बोला था? It was the most beautiful language in the world, right? It was the clearest and the most logical language. He asked them to guard it among them and never forget it. Gave a reason, और उन्होंने reason भी दिया था कि when as long as they held fast to their language, they had the key to their prison. Clear? Why were the elders of the village? तो अभी ये काफी क्वेश्चन जो है घुमा के दिए हैं, राइट, रिपीट भी हो गए हैं. एम हेमल वाज टेकिंग द क्लास ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन की लास्ट क्लास से उनकी एम हेमल की. दैट इज व्हाई others of the people were sitting in the classroom to
to respect their country. It was done not only to pay respect to M. Hamel, but to pay respect to his own language. How did French and other boys enjoy? This is your voice. Enjoy their lesson in writing. कैसे सारे बच्चे जो हैं enjoy कर रहे थे. That day, M. Hamel had new copies in the past. The words French Alsace were written on them. कैसे writing थी? बहुत सुंदर थी, beautiful, round hand. The boys set to work quietly. The only sound was scratching of the pen over the paper. Nobody paid any attention to the beetles who flew in. जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई beetle भी आ रहा है, तो कई बार होता है ना क्लास में कोई मक्खी आ जाती है या कोई beetle आ जाता है या कोई पीसन, जैसे अभी पीसन का भी पढ़ा था हमने, बच्चे क्या करते हैं बहुत ज्यादा नॉइस करते हैं. बट ऑन दैट डे सारी चीजें क्वाइट थी, किसी ने अटेंशन नहीं दिया. पे नो अटेंशन टू द बीटल्स. हाउ डिड हमल फील बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट. तो उस दिन सारी चीजें जो है बहुत शांत थे, स्ट्रिक्ट जैसे रहते थे. बट ऑन दैट डे ही वाज वेरी जेंटल. ही सेड मोशनलेस बैठे हुए थे. परहैप्स ही वांटेड टू फिक्स इट. और वो चाहते थे, वांटेड टू फिक्स ऑल द थिंग्स भी रूम में थी. इन हिज वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड एज ए मेमोरी. मेमोरी के रूप में सारी चीजों को जो है एक ध्यान से देख रहे थे. He wanted to fix them in his mind. He had the courage to hear every lesson to the very last. What led French to make this remark? French noticed that M. Hamel was feeling sad on having to leave. कि obviously अगर हम कहीं पे वर्क करें तो एक अटैचमेंट हो जाता है. तो सेम जो है किसके साथ था? एम हैमल के साथ था. 40 years and not being allowed to teach French any longer. और उनके साथ बाद अगर कोई ये बोले कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इंस्टेड ऑफ दैट क्या पढ़ाना है यहाँ पे? जर्मन. Yet he kept control on his emotions. He performed his duties faithfully. He heard every lesson to the last. The school was dismissed only at midday prayer time. What happened when the lesson in history was over? जब हिस्ट्री का लेसन जब ओवर हो गया था, द बेबीज चैंटेड देयर जो है लेसन कर रहे थे. ओल्ड हॉसर ने जो उसकी पुरानी एक बुक थी, he was holding his primer in both hands. He was spelling the letters with the babies. वो थोड़े से ट्रैवल कर रहे थे और आवाज जो है सही से नहीं आ रही थी. How well I remember that last lesson. Narrator. This scene doesn't remember. The narrator remembers the scene of old Hoser spelling the letter from the primer with the babies. He too was crying. His voice trembled with emotion. किस तरह से वो भी रो रहे थे ओल्ड हॉजर, और किस तरह से उनकी जो वॉइस निकल रही थी वो ट्रैम्बल कर रही थी. कई बार होती है ना, कब आने लगती है जब हम बोलते हैं, राइट? तो with emotion. It was so funny to hear him that all of them wanted to laugh and cry at the same time. ऐसी सिचुएशन बन गई थी, लोग हंसना भी चाहते थे बट रोना भी चाहते थे एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे. तो यहाँ पे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस है. नेक्स्ट लेक्चर में हम को डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन. तो Alphonse Daudet, ये हमने कई बार रिपीट किया. Alphonse Daudet was from which country? इस कंट्री से थे, ऑब्वियसली. कहाँ से थे? फ्रांस से. The story, the last lesson highlights which human tendency. यहाँ पे क्या आएगा? Procrastination. कि हम जो है हर चीज को कल के ऊपर जो है समय रहता है, बट स्टिल हम कहते हैं नहीं भाई हम क्या करेंगे इस काम को tomorrow, right? So that is your procrastination. What were the things being taken for granted by the people of Alsace? Time and school. What does the last lesson symbolize? Loss of language and freedom. तो मेन हमने लैंग्वेज की तरफ ध्यान नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करी अपनी कंट्री को. So that is the last lesson symbolize. What does last lesson signify? Change in life. What do the marching soldiers under the windows represent? The dawn of Persia in the defeat of French people. From where did the orders कहाँ से आए थे बच्चों? बर्लिन से आए थे, कैपिटल से. तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस ये हैं. तो बच्चों एक ये 4 क्वेश्चंस और हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं हम. What are the expressions in the great dread of scolding?
very badly scared of scolding. Why was Frank was shocked to see M. Hamel because of his formal dress? What attitude of M. Hamel surprised Frank? Soft and kind. क्योंकि और दिन कैसे रहते थे बच्चों वो strict. Who was M. Hamel? Language teacher. Clear? तो बच्चों हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करें। तो घर में आपके जो है रिवाइज दिस चैप्टर एट होम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30-40 नंबर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से इसको जो है रिवाइज करेंगे। अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, और जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.